मुनिषु उत्तानपादो भांस्तवो संगठन्नादेवु क्षीणोत्पवनमूर्तिहारोप्य विपख्यान् जन्नामधेयमविहाय निसंगबाधा लोके अंधसा तरति दुस्तजमंगमृत्युम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंसा संहिता वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते यज्ञमाया नामो दशमोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंद बल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशाध्याय श्रीमद्वासो निस्सम्योरियमेतं ऋषिनाथऋषि ध्रुवो छन्दसि अस्त्रमुरुष्टिषु जन्नारायणान्वितो सन्ध्यामानो एतस्मिन्माया बुद्ध्यो विजन्मिता क्षिप्रं वीणेरशुद्धिरजो क्लेशा ज्ञानोदयो यथा तैषान्यसाष्टं नरसि दण्डसि प्रजुञ्जतो सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससु विनिशितो आविविशोद्विमानं यथापनं भीमरवासि खण्डे निषिधाजै प्रधने शीलिमुखे वितस्ततो पुण्यजना उपद्रुता तमध्यनावन् कुपिता उदारयूता सुपर्णपूर्णमुखा इवाहर छोटान् अपि षट्कैरभिधावते मीशे निक्रीत बाहुरुशिरो वरोदरा निनाय लोकं परमर्कमण्डलं भजन्ति निर्विद्यो जनुमूर्तितेजस तान् हन्यमानानान् नवीक्षो विद्यकाननान् अग्निचित्रसेन भूरिश उतानपादिं कृपणा पीतामहो मनुर्जागादोपहतो महर्षिभिः मनुर्वाचो अलङ्वत्सातिरोरेणो तमोद्वारेणोपाप्तनाथेनो पुण्यजनान्यता नवतिष्ठ मनागस नास्वलकूलेन्द्रचित्तं तातो कस्मै तत्सद्विहुर्वनं बधो जरूपदेनां देवानां महारुष्टि अक्रीतै दशाम् नन्येकस्या राधेनो तत्सङ्गा भवे हता भ्रातुर्वधातीतस्तेनो त्वयङ्गो भ्रातुवत्सरे नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां जडात्मानं परागद्यो पशुबद्भवैषसं सर्वभूतानां भावेनो भूतभासं हरिं भवान् हरि आराध्यापि दुराराध्यं विष्णुं तं परमं पदम् सोतं हरेरनुध्यात्वं पुंसापि सन्मतो कथस्त्वं पद्यं कृतवान् सहितं सुतं तिथिख्यारुणसा मैत्रासाखिलगन्धसु समतीर्णो सर्वात्मा भगवन् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवती पुरुषो प्रकृतिर्गुणैः विमुक्ते विवन्निमुक्तो ब्रह्मो निर्वाणं मृष्यति। ส भूतै पंचवीर्वार าธุ สาธุ 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 สาธุ
तयोर्योषित पुरुषो ये वही तयोर्व्यवहार संभूति योषित पुरुषो योरी एवं प्रवर्तते सर्वो कीति सायमो ये वसु गुण व्यतिकरा राजन माया परमात्मन निमित्त मात्रम तत्रासीन निर्गुणो पुरुषो वर्षसु व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं तत्तो भ्रमति लोहविशोखलिनं भवान् कालसत्या गुणप्रवाहिनो विभक्तविर्या करोत्या कर्तैवो निहठन्त्या चेष्टा विभुन्न खलु दुर्विभाव्या सो अनंतकरो कालो निरटादीकृत अव्यय जनन जनयनो जनयन मारियन मृत्युनांतकम नो वै सबक्को वै दीपको ये वापरवो परेशमृतो विशतो समं प्रजा तं धावमानममिष्यनाथिजं तथा राजं स्यानीलं भूतसंघा आयुषोपचयं जन्तु सदैवोपचयं विभु पूर्वभाभ्याम् रैतो तस्थो दुष्टैषु वीररातसु केचित् कर्मो वदन्तेनो स्वभावमपरे निपूये के कालं परो परे दैवं पुंसु काममुटापरे अव्यक्तैषा प्रमेयेषु नानाशक्त्या क्यू दैशसु नो वै चिकीर्षितं तातो वो विराठो संभवम् मोचैते पुत्र को भ्रातु हटारो धनुदानुगा विसर्गादाम नियोतातो पुंसो दैवं सुकारण सो एवं विश्वं शिशति सो यवाहति हन्ति सो तथापि हरिध्यनङ्कारो नज्यति गुणकर्मभिः येषु भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनो सो शक्त्या माया युक्तो सृजन्त्यापि सोपाति तमेव मृत्युममृतं तातो दैवं सर्वात्मा नोपहि जगत्परायणं जस्मैवलिं विश्वशीलो हरन्ति गावो जथोता न विशीरामो मन्त्रिया जो पंचवर्षो जननी त्वं विआयु मातु सवत्न्यावयसा भिन्नमर्म वनं गतस्तपसा प्रार्थ्य प्रत्यागे ख्याता झोले वे मुद्धिं पदं त्रिलोक्या तमेवनंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्याप्यासितं निर्गुणमेकरक्षरम् आत्मानवन्निशं विमुक्त त्वज्ञसन्दस्मिन्निदं भीर्मसं प्रतीयते त्वं प्रत्यागात्मनि तथा भगवन्तमनन्दानमात्रम् उपलभ्य मन्त्रशक्ति भक्तिं विधायो परमांसनैकारि विग्रहां विवेक्षि ममाहमति प्ररूढं संदस्सोढोवं भद्रं ते प्रतिपंसीयसां परं श्रुतेनो भूयसा राजन्न गतेनो तथा वयम् येन प्रशिष्टां पुण्यश्लोक उदद्विजे विषं नो भूतस्तवसङ्गस्य निसन्नमात्मना येनङ्गिरिसभ्रातु धनैषु कृत्वाकृतं दशजीवा पुण्यजलं भ्रातृजन्ममादिशं तं प्रसादायो वत्सासु सन्नेचु प्रणयोदितो नो जावन्महताङ्किरो कूलं नोभि भविष्यति एवं स्वयंभुवो पुत्र मनुष्यो मनुध्रुवं तेना अभिवन्दितो साकमृषिभिः स्वपुरं जजौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते मनुवाक्यं नामैकादशाध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रदानन्दबल हरि बोल हरि बोल। द्वारसध्यायो श्रीमित्रोवासो ध्रुवं निवृतो प्रतिविद्यो वैशसादशोरनुपेत्यो भगवान् धनेश्वर तत्रागतसा अनेककिन्नरे स्तूयमानो
निबटत कृतांजलि धनदुवाच भोगो खेती अडाया सुपरिति सोस्मी तीन दत्तपिता महादेश दैरं तु सजामस्तज नो भवानी कमैख्या नो देख्या भ्रातरं तबु कालये वो हि भूटाना प्रभुरत्या बधुति अहं त्वा विदर्भाठो धीरज्ञाना पुरुषे वै स्वल्पी वाभैत्य तद्ध्याना जया पद्मविपल्ये तद्गत्सो ध्रुवं भद्रन्ते भगवन्तमरुख्यजं सर्वभूतात्मभावेनो सर्वभूतात्मा विग्रहं भजस्व भजनीयाङ्घ्रीमवलायो भवशिरं दुक्तं गिरीटं सत्या गुणमज्जा आत्ममायया जीविः कामं निपो मरन्मनोदं महत्तमुत्तान उत्तान देह विसंकित वरं वरार्हो अम्बुजनाभो पादव यो अनन्तरं त्वां वयं सुषुम इमेत्रिवासु सो राजेनो वरायो शोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती अरुषो बब्रे सरितां स्मृतिं दया तरित्या पत्नीनु दुर्जयातमः तैषो प्रीतेनो मनसा तां दत्त्वै बलस्तुतो पैषतो अन्तर्ददेशो वेशो पुरुषं प्रतिपद्यत अथादयतो यज्ञे संक्रतुभिर्तुर्भूरि दक्षिणे द्रव्याक्रिया देवतानां कर्मो फलप्रदम् सर्वात्मन्ये तथा पूर्वं तीव्रौर भक्तिमुद्भयम् दददर्शात्मनि भूतेषु दर्शामिति स्थितं विभुं तमेव शीलसम्पन्नं ब्रह्मणं दीनवत्सलं कोप्तारं धर्मसेतूनां नीरे पितरं प्रजा सतत्रिंशदर्शसहस्रं सहस्रं कीर्तिमण्डलं भोगैर्पुण्यखरं कुर्वन्नो भूरैर्वीरवैखरम् एवं भौषवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियो त्रिवर्गौ पवित्रं नीत्वा पुत्रायाद पाशनं मन्यमानो एवं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्या इतरस्वशो गन्धर्वा नगरोत्सरम् आत्मनन् आत्मा मन्त्रापत्य सूरिजो बलवृद्धिको मन्तपूरं परिव्यार भुवनचरण्य भूमण्डलं जलसीमे मेखला कालशोकालसस्थितमितिषु प्रजौ ईशा तैषां विशुद्धकरणो शिवराभिगद्यो बद्धाननं जीतमरुन्मनसा टाख्य स्थूलेतरारोभवप्रतिरुधे यत् दद्यादुरारोध्यो व्यवसत् समासो भक्तिं हरौ भगवती प्रवसन्न समानन्द बाष्पकलया मुहुर्मर्दमान विक्लिद्यमान हृदयो पुरकाशिमिताङ्गो नात्मानमङ्गसावितो मुक्तलिङ्ग सोददर्शो विमानग्रज्यो नवसो अवतर ध्रुवो बिभ्राजयद्दशो दिशोराकारपति विमोदितम् तत्रानुदे प्रजौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरवसरामुलेखिनं चिताव्यवस्थितेषु गदां सुवाससौ किरीटहारां गतसारुकुण्डलौ विद्यायोटाभुट्ट पगाय किङ्कराद्यूठितो सप्तसापि स्मितक्रम न नाम नमानि गृह्णन् मधुर्विश्व परसत्परानाभिजिताञ्जलि तं कृष्णपादोभिर्निर्विशेषमं बद्धाञ्जलि प्रशया नम्रकण्डरं नन्दनन्दाभूपशिशो सन्मीतं प्रीतो चतु पुष्करानावो सन्मतो सुनन्दनन्द उवाच भो राजन् सुभद्रं ते वासो नो अभीतोऽसिनो जं
पंचवर्षस्तपाभावान् देवमतीर्थिपति तैषा अखिल धातु नाजा देवी स्वपांगिनो पार्षदाभिहो संप्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम् सुदुर्लभं विष्णुपदं जीतं त्वया त्वं सूर्ययोग विशक्ष्यते आतिष्ठो तत् आदि दिवाकरादयो ग्रहतारा परिपन्थि दक्षिणम् अनासीनं ते पितृभिरापङ्गो करिष्यति आदिषु जगतां वन्द्यां तद्विष्णो परमं पदम् एतद्विमानप्रामतु उत्तमश्लोकमौलिना उपतस्थापिता मल्लूर्प्रोदुरं त्वमर्षि मैत्रिवासु निशम्य वैकुण्ठ वैकुण्ठ अद्यामुखयोर्मच्युतं वासमुरुक्रमर्प्य कृताभिषेको कृतनित्य मङ्गलो मुनि प्राणमयसाभिवादय परित्याभ्यर्थो हिंसा पार्षदाभिवन्द्यसारु ये वो तदधिष्ठानं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् तपोदानं पदो पुत्रो ददशान्तकुमार्गणं मृतो मुद्धि पदं दत्त्वा आरुरोधाग्नं गृहं तथा दुन्दुभयो नेजो मृदङ्गावानकानकरिव गन्धर्वामुख्या प्ररूपेतु कुसुमवृष्टिः सर्वलोकालाभ्य सुनीतं जनिं ध्रुवा अन्नस्वरपदं हित्वा दीनामस्येति दिष्टपम् इति व्यभिष्टं तेषु व्यवसायो सुरतं ददृश्यामासु आर्यं पुरीं जानीनोपसरिं तदु तत्रोपसंबद्भिः पथि वैमानिकैश्वरैः अवकीर्यमानो तद्दिशे कुसुमैर्क्रमशो गहान् त्रिलोकीं देवजानेनो सोऽतिव्रातयो मुनिनां परन्त्यार्थवशाद्वतीं विष्णो पथमगामगा जद्भ्राजमानं सुदुषे सर्वतो लोकस्थयो धनु विभ्राजन्तो ये ते तन्नाम व्रजन्तन्तुषु ये अनुव्रजन्ति भद्राणि सरन्ति ये निशम् सन्ता समदीशो शुद्धा समभूतानुतन्दसा जन्त्यस्याच्युता मृत्युता प्रियबान्धवा इत्युत्थानपदो पुत्रो ध्रुवो कृष्णो परायणो अभूत् त्रयाणां लोकानां चूडामणि परिवामन गम्भीरवेगो अनिमीश्वा जोषितां चक्रमाहितां यस्मिन् भ्रमति कौरव्यो मिथ्याभीमो गवाङ्गनः महिमानं द्विलोकास्य नारीषु भवानिषि अद्यत्यां विनिदं श्लोकान् सत्यगाय प्रचितसाम् नूनं सुनीते पतिर्देवतायाश्च प्रभावेषु श्रुतिशोटाङ्गति दुष्टत्युपायेनाभिदपायिनौ नैवाधिगृहं प्रवन्ति किं नृप जो पंचवर्षे गुरुदारा सा ताभिजातो धीरेऽनुदूयत वनं मरादेशका करोजितं प्रभुं जिज्ञायो तद्भक्तगुणैः पराजितं जो क्षत्रबन्धुर्भिः तैस्यारुढैः उपनारिभिः वर्षपूर्वैः सदपञ्चवर्षजर्णो कल्पे प्रसादो वैकुण्ठवापतपदम् मैत्रिवासो एतत्ते वीतं सर्वं जत्पृष्ठो अहमिति त्वया ध्रुवैषोद्धामो सरसत्तरितं समतं सदा धन्यं स्यायुमजं पुण्यं स्वस्ताय नमः स्वर्गं ध्रुवं समं सौमनसं प्रशस्यो भगवर्षम् श्रुतेजस्वदयातिक्रमरित्यातियच्चेषितं भक्तिं भवेत् भगवती दया स्यात् अक्लेशक्षया महत्तमी सन्ततिर्सं सोटु शीलादियोगुना जत्रो तेजसंसन्नं मनो जत्रो दपनस्विना प्रजतो कीर्तेय प्रातो समवाग्ने निजन्मिनां सायं च श्लोकेषु ध्रुवैषु तरितं महत् पौर्णमयस्यां शिवा क्षीणाबाल्य द्वादश्यां श्रवणेषु श्रवणे अथवा दिने खेये पितिवादे संक्रमे अर्कदीनैव श्रावयेत् सदरानां ते सपादो प्रियासनो
निःशङ्का निःसङ्ख्यत्रात्मनां सन्तुष्टो इति सिद्ध्यति। ज्ञानमज्ञानतत्तायो ज्योतिर्ज्ञान सम्पथि मृतं कृपालो दीननाथेषु देवश्रीस्यानुगृह्णति। इदं मया ते वीतं कुरुद्वा ध्रुवैषो विख्यात विशुद्धकर्म हित्वार्भा करति नरकानि मातु व्यञ्जो विष्णुं शरणं जगाम। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे वैयासिक्यां ध्रुवचरिते चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते नामो द्वादशाध्यायो। श्रीमद्राधागुण कृष्ण प्रत्यानंदे बल हरि बोल हरि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशाध्यायो श्रीसुतोवाच। निशम्य कौसारवीणोपवर्णितं ध्रुवैः वैकुण्ठपदाधियो अहनम्। प्रादुर्भावो भगवत्यदुःखजे पृष्ठं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। श्रीविदुरुवाच। केति प्रचेदिषे नामो कैशापत्यानि सुब्रतो कैश्यान्नप्रख्यातः कुत्रो वा सत्रमासतः। मन्ये महाभारतं नारदं देवदर्शनं देनो प्रोक्तो क्रियायोगो परिचर्या वीरहरे। स्वधर्मशीलै पुरुषै भवान् जगपुरुषो विद्यमानो भवता नारदेने रीतो किल। धास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मध्यं सुश्रुवे ब्रह्मन् कार्ष्णेन द्रष्टुमर्हसि। श्रीमैत्रेयी उवाच। ध्रुवेशो तत्कलो पुत्रो पितरे प्रसिद्धे वनं सार्वभौमस्यं नैष दधि राजासनं विपितु। सो जन्मनोपशास्तानि संगो समदर्शनः दर्शो लोको विजटामात्मानं लोकमात्मनि। आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्याष्टामीत विग्रहम् अवबोधबरोध सा सैकात्मा मानन्दमनुसक्ततु। अव्यावच्छिन्नरोगाग्नि दग्धकर्मा मलाशयो स्वरूपमवरुद्धारो नानायुपलदरिख्यत। जरान्धावतिरोन्मत्तः मृगाकृतिभिरतन्मभिः लक्षितोपथिबालानां प्रशान्तार्चरीबानः। मत्वा तं गृहमन्मन्तं कुलवृद्धामन्त्रतो वत्सरं भूपतिं चक्रुर्वियांसं भ्रमते सुतम्। सुवासी वशयशस्य भर्जासूतो जरात्मजा पुष्पार्थं विघ्नकेतुञ्चो ईशमुर्जं वसुञ्जयम्। पुष्पार्णैषु प्रभाभर्जा दोषाचो बभूषतु। प्रातर्मध्याह्निनं सायं मीति जसन् प्रवासुतः। प्रदोषे निशितो विष्टो इति दोषासूतस्तया। विष्टसूतं पुष्करिण्यां सर्वते दशामधे। स्वचक्षुषतमाकृत्यां पत्यां मनु उवाचः। मनोरसूतो महिषी बीजरान्नन्दलासुता। पूर्वं कृष्णवतं जुम्नं शैत्यवत्यं धृतं घृतम् अग्निष्टोमतिराटाटं प्रजुम्नं शिविमुल्लनम्। उन्मूलको जनयज्जनं पुष्करिण्या शरद्पुटाम् अङ्गं सुमनसं श्वासं क्रतुभिरङ्गदङ्गयम्। शून्यथाङ्गैषु जापत्नीषु सेवे वेशमुल्लनम्। जलौ शीलोत्सो राजर्षि निर्विण्णो नीरगात्पुरा। जामाङ्गो शेपु केवकोपीता भगवद्या मुनयो किलो। गतासोस्तैषु भुजस्ते ममन्थो दक्षिणाङ्करम्। अराजीतरा लोके देशु विपीडिता प्रजा।
जातो नारायणां सेनो पृथुवद्याखितीश्वर श्रीविदुरुवाच तैषो शीलनिधे सख्या ब्राह्मणैषो महात्मनः अराज्ञो कथमभूद्दुष्टा प्रजा जद्विघ्नादयो किं वा सुवैनो उद्दिश्य ब्रह्मदण्ड वजुञ्जय दण्डव्रतेनो राज्ञी मुनयो धर्मकोविदा नावधेयं प्रजापालो प्रजाभिर्घवावपि जलसो लोकपालानां विव्रते को सतेजसा इदख्याहि मे ब्रह्मन् सुनितात्मा विशेषितं सदरानायो भक्तायो त्वं पराबरवित्तम सुमित्रुवाच अंगो समेतं राजर्षि राजहारो माकृतुं नाजग्नुर्देवताश्च स्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः सो ऊशुर्विश्विता तातो यजमान अर्षद्विजो हविंसि हूयमानानि नोते गृह्णन्ति देवता राजन् हविष्यं दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते सन्दंस्या जातवा न जातनामानि योजितानि धृतव्रता नो वीरानि हो देवानां हिरण्यं वयन्नपि जन्नो गृह्णन्ति भागान् स्वाञ्जे देवा कर्मसाक्षिणः श्रीमैत्रेयीवाच अंगोदीं दीजवसो सूता यजमाना सुदुर्मना तत्प्रस्थु व्यसृष्टवासं सरिषां सांसदानुज्ञया नागसन्त्या नाहूता देवा नो गृह्णन्ति ग्रहणीयो सदा सम्पन्नतयो ब्रूतो किमद्यो मया कृतम् ये सरसत् सम्पतेषु नरदेवेहो भवतो नागं भावन्मनासितम् अस्तेकं प्रोक्तमदगं यदि देहद्वितमत्प्रजा तरासादयो भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं रिपो ईष्टस्ते पुत्रकामेषु पुत्रं दश्यति यज्ञभू तथा स्वभावगेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोगसो यज्ञपुरुषो साक्षात्पत्यायो हरिर्भूत तान् कामान् हरिर्दद्यत् जान् कामयति जना आराधितो तथैवैते तथा पुंसां फलोदय इति व्यभिषितापि प्रस्थैषो राज्ञो प्रजापत्ये पूर्णं संनिर्भवन् श्रीदेवीष्टायो विष्णु तस्मात् पुरुषौ कूटस्थौ हीलमाल्याम्बरादिलो हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमास्थायो मादायोपादयन् पाशं सुविप्राणुतो राजा गृहीताञ्जलिर्नौगसो अपग्रहायो मुदायुक्तो प्रादात्पत्न्या उदारधि सातरपुंसवनं राज्ञी प्रश्यो वै प्रत्युरारसि गर्भं कालोपावृते कुमारं सुषुवे प्रजा स्वबालो एव पुरुषो मातामहमनुव्रतो अधर्मा स्वभवं मृत्युं तेनाभव धार्मिकः तो सरासनमुज्जैम्यो मृगयुर्वनगोचरो हन्त्या सा दुर्गान्दीनां वेणुषा विचरौ जनः आकीरे क्रियते बालान् वैश्यानान् हरिदारुणो प्रसिद्ध्यो निर्णु क्रोशो पशुमारा अमारयत् त्वं विलिख्यो खलु पुत्रो शासनै विविधै निपो जरानो शासितं कल्पो भीषमाले सुदुर्मना प्रायेणावार्षितो देवो जे अप्रजागृहमेधिनः कटपत्या भूतो दुःखं येनो सिन्दन्ति दुर्बहम् जतो पापीयसी कीर्ति अधर्मैषो महानिनां जतो विरोध सर्वेषां जतो अधीरनन्तकः कष्टं प्रजापदेशं वै मोहबन्धमात्मनो पण्डितो मन्येतो जलसा केसराग्र्यः करपत्यं वरं मन्ये सरपत्यं शरां पदात् निर्व्यध्येतो गृहेन्मर्षो संक्लेशा निवाग्निनः
एवं सो निर्विद्यमानो नीपो गृहान्निशीथो उत्थायो महो माहोदयादयान् अलब्धनिद्रेह अनुपलक्षितो निविहित्वा गतो वेणुशुभं प्रसुप्तम् प्रसुप्तान् विज्ञाय निर्विद्यो गतं पति प्रजा पुरोहिता मैत्या सुहृत् गणादेव विषीकुरुन् कुर्वाणो मति शोक कातरा तथा निर्गुरुपुरुषो कुयोगिनः अलख्यन्तो पदवीं प्रजापतिरतो अद्यमा प्रत्युपस्थिता ते पुरीं ऋषीन् समेता अभिवन्द्यामासवो निवेदयन् कौरव्यो भरती विप्लन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे प्रोव्रजानामो त्रयोदशाध्यायो श्रीमद्राघवेन्द्र कृष्णकृतानन्द बल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्दशाध्यायो समितिर्वासो भृगादयन्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनो गोप्ता साजति वाणीनां पैसन्तु पशुसंयता वीरमातरमाहूयो सुनीतं प्रवादिनं प्रकृत्या संयतं येन अद्वासिञ्चं पतिं भुव श्रुतानिपासनगतं येन मृत्यु उग्रशासनं नीलीलु दैशवो सज्जो सर्प त्रष्टायिवार्थ सो आदुरान्निपपन्थान् उन्नद्धो अस्ते विभूतिभिः अवनीने महाभागान् स्तब्धो सम्भावितो सतः एवं मदन्धो उच्छिक्तो निरङ्कुशो इवाधिपो पर्यटन् रथमस्थायो कम्पयन्नीवो रोदसी नो स्वस्तभ्यं नो तादिप्यं नो हेतवं धीयो गतिः इति न्यवाबधा भीरिघोषेणो सर्वतः वेणेशावेक्ष्य मुनयो दुर्गशैत्यो व्यसितं भीमेशो लोकाव्यसनं कृपयोचु स्मो सत्रिशः अहो उभयतो प्राप्तो लोकेशो व्यसनं महत् दारुण्यो भयतो दीप्तो इवो भास्कर पाले आराधक भयदेवो कूटो राजा अत अर्को ततो ऐप्यसिद्ध भयदेशो कथं स्यात् स्वस्ति देहिना आहिरीवो पयो पोषो पोषकैस्याप्यानार पोषकैस्यान अनर्थभूत बेनो पगितैवो खलु शूनीथा गर्भसम्भवः निरूपितो प्रजापालासु जिगांसते वै प्रजा तरापि सन्त्यामं नास्मान्नत् पाठकं स्विषेत् तद्विद्वद्भिर्विवृत्यो वेणु अस्माभिर्वृतो निप सन्तितो जयिनो वासन्नो गृहीत्या धर्मकृत् लोकविकारो सन्दग्धं दहिष्यानो सदेशा एवमध्यायायन मुनयो गुरुमञ्जवो उपव्रजाध्वन्वेणुं सन्तहिताथो सावभिः श्रीमुनिषु निर्वर्जानि बोधर ते विज्ञापयामासो भो आयुषि बलकार्तीनां तपोटाटो विवर्धनम् धर्मो आश्रयित्वा पुंसां वाङ्मनाकायुषि लोकान् विशोकान् वितरान् प्यान्स्त्यासङ्गिनः सोते मामिनियत् शरीरे प्रजानां क्षीमलक्षणो यस्मिन् विनष्टे निर्वतीरे निर्जार्बरो हि आहति राजन्न शब्दामत्यो इभ्यः सौरादिभ्यो प्रजानपो रक्षन् यथा बलिं गृहन्नीवो प्रत्यशो मोदते जैशो राष्ट्रे पूरे शैवो भवान् यज्ञपुरुषो इद्येतो शेषो धर्मेणो जनैर्वर्ण समात्मकै तैशो रज्ञो महाराजो भवान् भूतभावनो परितिष्ठसि विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने तस्मिन् सुते किमग्रामं
जगतामीश्वरेश्वरो लोका सोपालाधीतस्मै हरन्ति बलिमादिदा तं सर्वलोका मुरमय्य संग्रहं तैषयं दिव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रै जजतो भवायुति राजन् सुदेशाननुरुद्धमरस् यज्ञेनो जोष्मद्गीये द्विजातिभिवितानमानेनो शूरा कलाहरे शिष्टा तु सूतस्त्वा प्रेषन्ति वाञ्छितं कण्ठेन नारसिबीरोचेषितम् श्रीवेणुवाच बालिशावतु मूयङ्गो अधर्मे धर्ममालिनो जे मृकिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते अजानानन्तरि गुरहा नृपरूपिणमीश्वरं नानुविन्दन्ति ते भद्रमिहो लोके परत्कश को यज्ञपुरुषो नामो तत्रो वा भक्तिरिषि भक्तिस्नाविदुराणां यथाचारे कुयोगिनां श्री विष्णु विरिंचो गिरीशो इंद्रो वाजसो रवि पर्जन्यो धनजो सोमो कीर्तिराज्ञी पांपति इति सन्येषु विविधा रवो वरसापयो देहे भवन्ति नृपति सर्वदेवो मयो नृपः तस्माकं कर्म भविप्रा जजब्धं गतमत्सरं बलिंसमध्यङ्गरतो मत्तो वन्योको अग्रभूपुमान् श्रीमतिर्वाच इथं विपर्जयामिति पापीया अमृतपथं गतः अनुनीया मानस्त्वं जञ्चानो चक्रभ्रष्ट मङ्गलम् इति सत्कृतास्ते द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्यसंक्रायां तस्मै भिरोचक्र तस्मान्मां कर्म भविप्रा बलुद्धं गतमत्सरा बलिंसमध्यं भवतो मत्यो ऐन्यो को ग्रहभूपुमान् श्रीमतिर्वाचो इथं विपर्जारमति पापी यानोत्पथं गतौ अनुनीयमानभूतञ्चाङ्नो चक्रे भ्रष्टमङ्गलम् इति ते सर्कीतस्थाने द्विजापनितमानिनुतमायां भव्याद्रुमजां तस्मै बीजुरचक्रुषु हता हन्यतां हन्यभावेनो पापो प्रकृति दारुणे जीवन जगदावासु कुरुते भस्म साध्रुवम् नायमहत्या सरसर्पीतो नरदेवो वरासनं जो अधियज्ञपतिं विष्णु विनिन्द्यतानपत्रप को वैनं परिसक्षितो वेनमेकस्मिते शुभं प्राप्तो ईदृशमैश्वर्यं गदनुग्रहवाजनम् इत्थं व्यभिषदाहन्तुमिषयो परमेश्वरो निजघ्नोरुः स्कीतैर्वेणुं हतमच्युतनिन्दया ईशिवि परिस्नपटं गति पुत्र कलेवरं सुनिधा पालयामासु विद्यायोगिनो सूते एकदा मुनियल्कण्ठे स्वसंवत्सरशैलाप्युता कूटाग्निं सत्कथा चक्रुरूपविष्टा सरित्तति दिक्षोटाठीनां तरोत्पातानाहु लोको भयङ्करम् ऐप्या भद्रनाथायो देशुवो नो भवेद्भुवः एवं ब्रह्मेश्वरीशे यथावतां सर्वतो दिशं पांशु सम्मतितौ भूरौ अभूरौ भूरि सौरानमतिलुब्धताम् तरुपद्रवमज्ञाय लोकेशो वशूलुम्पटं भर्तुपर्यातस्मिन्यै पञ्चोदिगांसता चौरप्रायं जनपटं हीनायत्वसञ्जयं लोकायो नारायणायो सतापि तरो दर्शन ब्राह्मणो समति संतो दीनानामुपकिलो श्रवण भ्रमते सापि भिन्न तण्डात्पयो यथा नाङ्गैषो वंशो राजर्षेर्येषो संस्थातु मरति अमोघ विद्याहि निपा वंशे अस्मिन् केश श्रवस्या विनिचितैर्वमृषयो विपन्नेषो महिमते ममन्थु रूढं तरसा तत्रासीत् बाहुको नर
काककृष्णो अतिस्र रस्वांगो रसबाहुर्महाहनु रसपानिम्लासाग्रो रक्ष्यक्षत्रात्र मूर्धज क्षन्तु तेनावटोदीनं किं करोमीत्यावादिनं निषेधत्यापूर्वास्ततंसो निषादस्तु भवत् तैषु वंशस्तु नैषादा गिरिकारणगोचरादेन हरद्यामानो व्यसङ्कल्पसमुनम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंससंहितायां चतुस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशो अध्याय। श्रीमद् राधारमण कृष्ण प्रदान बल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदशाध्याय श्रीमद्वासो अथोतेषु पुनर्विप्रेरपुत्रेषु महीपते भाव्यां यजमानाभ्यां मिथुनं संपद्यत तदृशा मिथुनं जातो मीशो ब्रह्मादिनो ऊषु परमस्तुषा बीत्वा भवत्कलां श्रीदिशुषु येषु विष्णुर्भगवतो कला भुवन पावनि इयञ्चो लक्ष्म्या सम्भूति पुरुषैष्यानपायिनि अत्रो जो प्रथमो राज्यं कुमान् प्रतिदादसु पृथुर्नामो महाराजा भविष्यति पृथुश्रवा इयञ्चो देवी सुरति गुणभूषणभूषणम् अर्चिनामो अर्चना भरारोह पृथुमेवावरुद्धति एषो सख्यापरं श्रेष्ठो जातो लोकविडम्बना इयञ्चो तत्परा हि श्रीरनु यज्ञे अनपायिनि। श्रीमेषवाच प्रशंसन्ति स्मो तं विप्रा गन्धर्व प्रवराजगु मुमुषु सुमोधारो सिद्धा नृत्यन्ति सोऽस्त्रिया संगतुर्जामृतं राज्ञा निरुदुन्दुभयो दिवि तत्रो सर्वो उपाजग्नु देवाधिपितॄणां गणः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवै शासितुर्सुरेश्वरी वन्येषु दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्दं गदाभृत पादे अरविन्देषु तं वै मेने हरिकलां तेषा प्रतिहितं चक्रमंसासु परमेष्ठिन तैषाभिषेकोऽरब्धो ब्रह्मवैत्र ब्रह्मवादिवि अभिशेषनिकान्यसा आजग्नुः सर्वतो जना सरित्समुद्रागिर्यो नागा गावो खगा मृगा द्यौ खीटी सर्वभूतानि समाजरूपायनं सोऽभिक्षितो महाराज सुवासा सालङ्कृता पैट्नाभिर्मिषितालङ्कृतिर्जुन अग्निवारो तस्मै जहारुधरजो हैमं वीरो सनातन वरुणो शल्यस्रावो वटपत्रं शशिप्रभं वायुंसो सबलिज्येनो धर्मो कृतिमयीं महीं इन्द्रो कृतमुश्रीयो दण्डं संयमं मनः ब्रह्मा ब्रह्मयं वर्मो भारती हार्मुटुं हरि सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्या त्वांस्यं दशचन्द्रमसिं रुद्रो शरचन्द्रो तथाम्बिका सोमो अमितमानमानस्वातुष्टा रूपाशयारथम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मीयाय भूपादुकी कविभ्यौ पुष्पाबलिभिर्नः नैत्योपनीतं विचित्रमदिमालिखेसरा अन्यगाशिषु शक्त्या समुद्रा शङ्खमात्मजं सिद्धवो गन्धर्वा नद्या रथवीरसा महात्मनो सूतोऽथो मागधो वन्दितं स्तुतुपस्थिरे तावकां स्थानविग्रयो पृथुर्वैन्य प्रजापवान् मेघधारयो वाच प्रसन्नामिदमब्रवीत् श्रीपृथुर्वाच भो सूतो हेमारसंयो वन्दीनो लोके अधुना वस्वस्यो वै स्यात् किमाशयो मे तवो येषो रच्यतां मा मज्जभुवन् विदधा गिरान् तस्मात् प्रख्ये अस्मद्रूपसूतालभ्यां परिसठो श्रोतमपि व्यवाच सत्योत्तमो लोको गुणानुवादा जोषितं गोष्ठयन्ति सद्यः
महद्गुणानुभावाने कर्तुमीशोऽपि के स्तूयते सतोऽपि तेषापि विषेतो विप्रलब्धे जासुनकुमतिर्नवेद प्रबोध्यात्मानं स्तोत्रं जुगुप्त्यासि विश्रुता हरिमन्त्रो परमोदारो पुरुषो वा विगर्हितम् अभयस्त्वाभिलोके श्रुतद्यापि रविबरीमति कर्मभिः कर्ममात्मानं गापयिष्यामि बालवत् इति स्मद्भाटमापरापानभयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे पीठुचरिते पञ्चमध्याये श्रीमद्राहुगुरुकृष्णप्रकाशने बोल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare